Welcome back, students, to Gyanmanjari Vidyapith Online Education. Students, this is a unit memories related to childhood, and that's why the title of this unit that's given the memories of childhood. Okay, students. So in the last lecture, we discussed about this story of this girl who has long hair, and that's why the title is first part title is given the cutting of my long hair. Okay, students, so that we discussed in the last lecture up to this portion. Okay, that she was sitting and she could realize that actually one one lady is observing her and she was gazing at her. So what is that and what is the strange thing about this that we are going to discuss today? The further discussion, you may carry your textbook with you. Vistas. Okay, I saw that I was the only one seated, and all the rest at our table remained standing. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. Actually, she sat first of all. शी थॉट दैट एक्चुअली नाउ इट वॉज अ टाइम टू सिट. उसने ऐसे सोचा, वो बैठ गई चेयर पे और उसने ऐसे सोचा कि अभी ये जो है वो बैठने का टाइम है. बट शी वॉज फीलिंग वेरी मच एम्बेरेस्ड बिकॉज शी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज सिटिंग लाइक दैट. वो एक ही लड़की थी, वो एक ही इंसान थी जो कि वो ऐसे सिट कर चुकी थी. बाकी सब लोग हैं वो ऐसे के वैसे की वैसे ही खड़े रह गए थे. सो दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग लिटिल बिट embarrassed. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used. Even she didn't know how to use the chair properly. उसे ठीक से ये भी नहीं पता था कि चेयर्स को ऐसे कैसे यूज़ करते हैं. अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड. अभी जो है वो सेकेंड बेल जो है वो साउंड करता है वैसे. All were seated at last and I had to crawl back into my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him. She could listen the kind of voice of a man. वो किसी इंसान का ऐसे वॉइस सुनती है और वो उसकी ओर देखने को ऐसे ट्राई करती है. वो वॉइस कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है, वो देखने के लिए वो ट्राई करती है और वो उसे फाइंड करने के लिए वो ट्राई करती है. But all the others hung their heads over their plates. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale faced woman upon me. जैसे कि वो उसे ढूंढने के लिए ट्राई करती है, she could find one woman. Actually, she was totally observing and looking at her only. That pale face woman. वो पेल फेस वाली जो वुमन होती है वो कॉन्स्टेंटली उसे देख रही होती है और उसकी नज़रें उसके ऊपर ही होती है. Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. The man ceased his mutterings, and then a third bell was tapped. Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. Actually, she was confused and she was afraid that why that lady is gazing at her right now. वो पूरी तरीके से ऐसे कंफ्यूज थी कि वो जो लेडी है उसकी और ऐसे ऑब्जर्व क्यों कर रही है, उसे क्यों इस तरह से देख रही है. एंड व्हेन एक्चुअली ऑल द पीपल स्टार्टेड with knife and fork, she was actually about to cry. And actually she started crying. जब सभी लोगों ने फोक और नाइफ की हेल्प से अपना जो ईटिंग होता है वो स्टार्ट कर दिया था, तब वो रोने लगती है. फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर. और वो इस बार बहुत ही डर चुकी थी. एक्चुअली वॉट इज़ द रीज़न ऑफ दिस afraidness? What is the reason behind this fear? Let's see. Next paragraph. But this eating by formula was not the hardest trial in that first day.
Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale faced woman talk about cutting our long, heavy hair. Actually, what is the reason behind this cry? And now the more reasons are going to be increased because here one another character enters this story. Who's this character? My friend Judwin. Actually, Judwin knows the words of English, and that's why she knows that actually this pale faced woman is trying to cut the long heavy hair, their long heavy hair, and actually these people don't wish to cut their hair. So actually this is also the problem. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. It means in their culture, it was not good to have short hair. In their culture, the people who are not able to maintain the hair, even the enemies, they cut the hair like this. Otherwise, they keep the beautiful long hair throughout the life. So here, when it is the matter about cutting the hair, she doesn't like this matter at all. उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इस तरह से हेयर को कट करने की जो बात आती है उसकी वजह से उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. नेक्स्ट पैराग्राफ. We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. We discussed for fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong. Means they were making arguments, they were discussing about all these things with those people, but afterwards, Judwin told her that actually they have to submit the hair because they are strong. ये जो जुडविन है और ये जो गर्ल है वो दोनों इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स करने में और ना ही खुद के लिए स्टैंड लेने में. सो अभी इसलिए जुडविन बोल रही है कि वो लोग ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है. सो हमें अपने जो हेयर है वो यहाँ पे हमें सबमिट करने ही होंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. नो, I will not submit. I will struggle first, I answered. Actually, this girl is not ready to submit the hair without any kind of struggling. ये जो गर्ल है वो किसी भी तरह की स्ट्रगल किए बिना ही अपने हेयर को ऐसे सबमिट करने के लिए एग्री नहीं हो रही है. इसलिए वो रिबेल कर रही है कि मैं रेडी नहीं हूँ अपने हेयर को सबमिट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ. आई विल स्ट्रगल फॉर ऑल दिस थिंग्स. I watched my chance, and when no one noticed, I disappeared. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. Along the hall I passed without knowing whither I was going. Turning aside to an open door, I found a large room with three white beds in it. The windows were covered with dark green curtains, which made the room very dim. Here, students, it is the description also given here. Actually, this girl is trying to disappear, this girl is trying to escape from the situation. यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो गर्ल है वो सिचुएशन से एस्केप करने की, सिचुएशन से भागने की ट्राई कर रही है और वो चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर है वो कट ना कर दिए जाए और इसलिए वो जितना साइलेंटली अपनी शूज़ की हेल्प से वहाँ से डिसअपियर हो सकती थी, वहाँ से मूव कर सकती थी,
वो कोशिश कर रही है. Along the hall I passed without knowing whither I was going. This girl even doesn't know where actually she's going. उसे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर जा रही है. Turning aside to an open door, I found a large room with three white beds in it. वहाँ पे वो आगे जाती है और फिर क्या होता है कि उसे वो ऐसे डोर ऐसे देखती है कि एक डोर जो है वो ऐसे ओपन ही पड़ा हुआ है और उसमें वो जो लार्ज रूम था वहाँ पे थ्री वाइट बेड्स जो होते हैं उसे वो ढूंढती है, वो उसे वहाँ पे दिखाई देते हैं. द विंडोज वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टन्स. सी बिकॉज ऑफ दिस डार्क कर्टन्स देर वॉज डार्कनेस इन साइड द रूम. रूम के जो है वो कर्टन्स वो किस कलर के हैं, सो वो डार्क ग्रीन कलर के हैं. और ऑब्वियसली इस डार्क कर्टन्स की वजह से रूम के अंदर पूरा की तरह ऐसे शेडो छाया हुआ है, पूरा लाइटनेस नहीं है रूम के अंदर, विच मेड द रूम वेरी डीम, जिसकी वजह से जो रूम है वो पूरा का पूरा डिम लग रहा है. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देर. एक्चुअली देर इज़ नो वन, वहाँ पे कोई लोग नहीं है. सो दिस गर्ल फील्स लिटिल बिट रिलीफ. इसकी वजह से ये जो गर्ल है उसे थोड़ा बहुत रिलीफ फील होता है. I directed my steps towards the corner farthest from the door. On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. और वहाँ पे कोई था नहीं, उसने किसी को देखा नहीं वहाँ पे, इसलिए उसे रिलीफ फील होती है और वो ऐसे क्रॉल करते करते वो ऐसे खिसकते खिसकते उसके रूम के अंदर वो चली जाती है और वो एक कॉर्नर को ऐसे फाइंड करती है कि वो अपने आप को खुद को ऐसे छुपा सके. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीड आउट shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. Actually, she was there inside the room, and at that time, she could observe, she could listen the footsteps of a person. जब वो वहाँ पे अंदर होती है रूम के अंदर, तब उसे ऐसे किसी के फुटस्टेप्स जो है, किसी के पैरों की आवाज़, जैसे कि कोई रूम में आ रहा हो वैसे उसे सुनाई दे रहा है. वो ऐसे फील कर पा रही है कि कोई वहाँ पे आ रहा है. Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me, I didn't open my mouth to answer. She knows that actually outside in the hall also, outside the room also, there were so many voices calling her name. ऐसी बहुत सी आवाज़ें थी रूम के बाहर जो उसके नाम को पुकार रही थी, उससे बुला रही थी. इवन उसे वो भी पता है कि जुडविन जो है वो भी उसे सर्च कर रही है, उसे ढूंढ रही है, पर उसने अपना मुंह ही नहीं खोला आंसर देने के लिए. शी डिडंट स्पीक आउट एनीथिंग. उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने कुछ आंसर ही नहीं दिया. Then the steps were quickened and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. फिर जो आवाज़ें है वो ज़्यादा पास आने लगी और उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके पास आ रहा है. And it was very excitement moment. Rather, she became nervous. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. फिर क्या होता है, जो लेडीज़ होती है और जो गर्ल्स होती है वो रूम में एंटर होती है. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. फिर क्या होता है, वो लोग उसे ढूंढने की ट्राई करते हैं और कुछ लोगों ने ऐसे कर्टेन जो है कुछ लोगों ने कर्टन्स जो होते हैं उससे ऐसे खींच लिया एंड दे थ्रू इट अप. एंड बिकॉज ऑफ कर्टन्स एक्चुअली देर वॉज डार्कनेस इनसाइड द रूम. कर्टन्स की वजह से रूम के अंदर डार्कनेस होती है. जो कर्टन्स वहाँ पे नहीं है अभी उसे खींच लिया है, उसे थ्रो कर दिया है. इसकी वजह से रूम के अंदर सडनली ऐसे लाइटनेस आ जाती है. वॉट कोज दैम टू स्टूड एंड लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो. What caused them to stoop and look under the bed, I do not know. I remember being dragged out. Though I resisted by kicking and scratching wildly, in spite of myself, I was carried
downstairs and tied fast in a chair. एक्चुअली इस गर्ल को पता नहीं है कि किस वजह से उसे ऐसे वहाँ पे उस लोगों ने वो वहाँ पे बेड के नीचे उसे सर्च कर पाए। उसे सिर्फ इतना ही याद है कि उसे ऐसे ड्रैग किया गया था, उसे खींचा गया था, एंड आफ्टरवर्ड्स शी वॉज देयर डाउनस्टेयर्स। उसे डाउनस्टेयर्स लाया गया था और उससे एक चेयर के साथ वहाँ पे बांध दिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, I cried aloud, shaking my head. Actually, she was protesting a lot. वो काफ़ी अपोज करती है और किकिंग करती है और वो ऐसे चिल्ला रही होती है और अपना जो हेड है वो भी ऐसे हिला रही होती है. The while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them neigh off one of my thick braids, then I lost my spirit. उसे ऐसे फील हुआ होता है अपने हेड पे, वो जो कोल्ड ब्लेड्स होती है वो उसे अपने हेड पे ऐसे फील हो रही होती है. सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड suffered extreme indignities. People had stared at me. उसके बाद ऐसे होता है कि लोग उसकी तरफ ऐसे स्टेयर करते हैं. उसने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की गई हुई है, फेस की गई हुई है, इंडिग्निटीज़ जो है उसने सफ़र किया हुआ है. आई हैड बिन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट. एक वुडन पपेट की जैसे उसे ऐसे ट्रीट किया गया है. सो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे. एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कवर्ड्स. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me, nor a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. For now I was only one of many little animals driven by a header. उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अभी उसके हेयर भी ऐसे कट किए गए होते हैं, उसे भी ऐसे पपेट की तरह ट्रीट किया गया हुआ है और इसके बाद भी कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए भी उसके पास नहीं है. दैट हर मदर एक्चुअली वॉज हैबिचुएटेड टू डू सो. सो दैट्स वाई शी फील्स very much loneliness. And finally she is also one of this so many girls who had cut the hair, long beautiful hair. वो भी ऐसे बहुत सारी गर्ल्स में से ही एक लड़की बन चुकी थी जिन्होंने अपने लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर कटवाने पड़े थे. सो हियर एक्चुअली दिस पार्ट 1 कटिंग ऑफ माई लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर इट एंड्स अप. ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू डिस्क्राइब दिस इंसिडेंट ऑफ कटिंग लॉन्ग हेयर विद दिस गर्ल. ये जो इंसिडेंट है वो आपको डिस्क्राइब करना है, वो आपको मेंशन करना है, वो आपका आज का होमवर्क है. सो स्टूडेंट, सपोज यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.